Welcome back to the machine learning session, everyone. So, as promised, in today's session, we are going to get started with our Python program. And here we are going to write a machine learning program where we are going to use random forest classification. And let me quickly give you a quick recap what we have done in the previous session. In the previous session, we created the data by ourselves, and in that data, we have found out like how you are going to create, what are the features, why the features are important, and considering that we have created the attrition of that dependency. So basically, we have created our data by using NumPys and Pandas. Now, let me quickly give you a recap of what we are creating for the students who have lost the track or who are not really very continuously they are looking onto the videos. So for them, we are creating an employee satisfaction, or you can say a helping hand, a machine learning model for HR, for basically human resource, an analysis, you can say, where we are going to find out whether the employee is happy or not, whether they are on an urge of leaving the company or they are going to stay. In that, we have considered a data set. I'm going to quickly open the data set so that you will see and you'll see how the dependencies are going to be. So let me quickly open that in front of you so that you'll understand each and every segment of it. So I'm going to open Excel, and in Excel, I'm going to open this where I can see the first one is age. Obviously, age is a factor, right? And why age is a factor? Because age, if you are more than 50 or 60, the tendency of working is actually, it degrades. Then we have gender. Obviously, gender doesn't have that much of impact, but still it does. Then we have years at company, how many years in the company you have spent. Then we have job role, we have monthly income, overtime, job satisfaction, work-life balance, and training timings last year. So these are all we have taken. Now I'm going to show you the importance of each and every feature which we have considered over here. Obviously, this years at company which we are considering, it is going to be considered which is less than 3. Then these are the people who are urge of leaving. There are higher tendency that these people are going to leave, right? Then we have overtime. If there is overtime, if people are doing overtime, definitely there is, yes, because they are not able to maintain their work-life balance. So that is absolutely a risk factor, a risk point onto it. Then we have job satisfaction where you can see the numbers. 5 being the best, 4 means or 3 means they are good in between. But 1 and 2, if anyone is marking themselves as 1 and 2, that means they are on an urge. It's a risk factor. Considering all these aspects or features, we have come across with this model, and how this model is going to help an HR, that is what we are going to create. So let's quickly get started. And before we get started, let me quickly share what we have created previously. And before that, let me quickly share with you how you are going to like create so that you can revise in case if you have missed out the previous class, you can actually see how we have created our data and how the data looks like. So let's quickly see on Google Colab how you have created the data in the last class. So everyone, we are at our Google Colab, and this is what we have done in the previous class, where we have first import pandas and numpys. These two libraries are going to help us to run all the mathematicalization behind the code which we are going to give. So we are going to simply use these libraries and the methods provided by these libraries to create the data. So first of all, what we have done, we have imported these libraries. Then by using numpy random.seed, we have created this function, and we have chosen
n is equals to 500. Basically, n is equals to 500 means 500 employees data along with it considered as number of rows. Now we have created a data frame. Inside the data frame, we have kept all these features. These are all columns: age, gender, years at company, job role, monthly income, overtime, job satisfaction, work-life balance, and training time last year. So these are all columns which are going to impact the attrition. Basically, by using a you can say rule-based logic, we have created the attrition which is impacted by overtime, job satisfaction, work-life balance, and years at company. Now, let me quickly share how we have created age. So basically, to create age, we have used numpy random randint. हमने numpy का random और randint को यूज किया है, जो कि 22 से लेके 60 इयर्स के बीच की जो भी हमारे पास एज है उसके एम्प्लॉयज को यहाँ पे करेगा, कंसिडरिंग एन रोज तक, मींस 500 रोज तक। उसके बाद हमने जेंडर किया है। जेंडर हमारा होगा चॉइस की फॉर्म में, रैंडम चॉइस मेल एंड फीमेल। हमने ईयर्स एट कंपनी लिया है रैंडम रैंडेंट, 0 से लेके 20 इयर्स तक का, और 500 एम्प्लॉयज। जॉब रोल हमने चॉइसेस में रखा है एचआर, सेल्स, आर&डी, आईटी एंड फाइनेंस, वो भी हमने एन नंबर्स में 500 रोज के लिए रखा है। हमारे पास फिर है मंथली इनकम, जो कि हमने रखी है रैंडेंट रैंडम को यूज करके 3000 से लेके 20,000 तक। फिर हमने ओवर टाइम रखा है चॉइसेस की फॉर्म में, यस एंड नो। और यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लगाई है जिसमें हमारा यस है वो है 30%, मीन्स 30% लोग चाहते हैं ओवर टाइम करना और 70% लोग चाहते हैं दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एज ओवर टाइम। सो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है। जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए हमने अगेन रैंडम और रैंडेंट को यूज किया है 1 से लेके 5, और वो भी एन रोज के लिए, मीन्स 500 रोज के लिए, 1 बीइंग द लीस्ट, 5 बीइंग द हाईएस्ट। यहाँ पे फिर हमने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी सेम चीज की है, 1 बीइंग द लोवेस्ट एंड 5 बीइंग द हाईएस्ट, सेम विद n नंबर ऑफ रोज, दैट इज n इज इक्वल्स टू 500। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग टाइम जो लास्ट ईयर का था वो भी हमने रखा है, जो कि रैंडेंट में हमने 0 to 6 लिया है। यहाँ पे 0 to 6 का मतलब है कि आप कितने सेटिस्फाइड थे अपनी कंपनी से, या फिर आप कह सकते हो जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है, या फिर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो या ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हो। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है एट्रीशन के ऊपर। एट्रीशन क्या करता है कि अगर इन सब का बेस, अगर इनमें से कोई भी दो फैक्टर्स लो है, मींस 1 और 2 रेंज में है, देन यहाँ पे जो एट्रीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ईयर्स ऑफ द कंपनी लेस देन 3 है, वो भी एक एट्रिशन में काउंट होगा, जिसका हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। अगर एक भी एट्रिशन उनके अंदर से 2 से ज्यादा है, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू 0 एंड 1, तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 का मतलब है दैट पीपल आर विलिंग टू लीव, 0 का मतलब है that people are going to stay. So considering this data set we have created, now the last is that we are going to save the data set in CSV format, and इसको जैसे ही हम रन करेंगे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने कोई भी डेटा सेट यहाँ पे नहीं लिया है, देर इज नो डेटा सेट यहाँ पे, ओनली सैंपल डेटा। द मोमेंट यू आर गोइंग टू रन इट, ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी ओवर हियर एम्प्लॉय एट्रिशन डेटा डॉट CSV। नाउ इफ यू वांट you can actually visualize it by clicking on this download. If you want to rename it, you can rename also by clicking on this rename. If you want to delete the file, you can delete the file. बट हम पाथ को कॉपी भी करके रखेंगे बिकॉज हमें इस कोड को यूज करना है in this Google Colab Jupyter notebook which we have already created.
और इफ यू वांट आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके इसी नोटबुक में भी क्रिएट कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप कहाँ पे कैसे क्रिएट करना चाहते हो। मैंने दो फाइल्स अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि ये प्रीवियस जो मैंने क्रिएट किया था ये पहले वाला है, और यहाँ पे ये वाला जो अभी आज हम क्रिएट करेंगे वो हम एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करेंगे यूजिंग द सेम डेटा सेट जो हमने कल क्रिएट किया था। ऑलराइट, सो एवरीवन लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आई थिंक आपको अब डेटा बहुत अच्छे से पता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके डाउनलोड्स में ये आपके पास आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। इफ यू वांट टू ओपन इट यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन टू इट एंड दिस इज गोइंग टू ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आप चाहे तो आप इस पे अपने एनालिसिस भी रन कर सकते हो। यहाँ पे आपके अलग अलग एनालिसिस केटरिंग टू ईच एंड एवरी एट्रिशन दैट इज गोइंग टू कम। बेसिकली जब मैं एट्रिशन के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आई हैव सिलेक्टेड दिस, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस, ओवर टाइम एंड योर्स एट कंपनी। इन सबको सेलेक्ट करके नाउ आई एम गोइंग टू click on this analyze data. Now it is going to create the data on the basis of this. Now you can see sum, सबका sum और yes or no, right? Similarly यहाँ पे भी आपका क्या है, work life balance, job and overtime के बीच में relationship है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे 30 टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्रिएट होंगे जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा चार्ट है जो कि आपको फुली प्रोवाइड करेगा सारे एट्रिशन को कंसिडर करते हुए। सो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स आप देख सकते हैं। अगर आपको बेटर विजुअलाइजेशन देखनी है तो वो आप अपने गूगल कोलैब पे भी देख सकते हो। लेट मी क्विकली शो यू। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। आप यहाँ पे जस्ट इन ग्राफ्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास हर तरीके का ग्राफ रेडी हो जाएगा। whether you wanted to talk about categorical distribution or any sort of distribution, you can click onto it and it is going to show you that previous cell output is requesting a new notebook cell. If you wanted to do, you can add upon to it or you can cancel onto it. You can click on this particular cell and you will get exactly what code is behind this visualization. That we have taken this visualization by putting matplotlib pyplot and seaborn library से, और हमने क्या कोड यूज किया है, पैलेट को यूज किया है और डार्क टोन को यूज किया है। If you wanted to add that, you can click on add cell and it will be done. Basically, I'm going to cancel it because we don't want, these are all visualization with the help of which you can get how you are going, how your data is going to look like, right? So this is like the categorical distribution where you can see, right? This is half and half. Over here, you can see how the attrition is taken care. Now, यहाँ पे आपके पास क्या है, factuals है, future warnings, palettes का, and this is like if you want you can generate code with DF, or you can view recommended plots, or you can interact with new sheet also. So these are all things which you are going to get when you are working with Google Colab. So this is what we have done when we started with Google Colab and we created the data set. So it was all about the previous class which we have taken. In this capstone class, the project which we are creating, it's an industry-based project. Now you must be thinking that why we have not taken the raw data from HR. Basically, considering employees' privacy, we cannot take any real data from any data set of any HR because that is going to count the illegal part. हम किसी की भी डिटेल्स ऐसे नहीं ले सकते हैं, राइट? बिकॉज इट इज लाइक प्राइवेसी इश्यूज पीपल में हैव, बिकॉज वील बी यूजिंग देयर सैलरीज। सो सैलरी वैसे भी डिस्क्लोजर साइन होता है सारे एम्प्लॉयज के साथ। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, इसलिए हमने डेटा यहाँ पे खुद की सहूलियत के लिए वी हैव created this data set and we'll be using this data set. I hope I have answered all the questions which were running behind. And now we are ready to create the ML model which we have thought of.
So let's quickly open the data set which we have started working with. So what we are going to do, I am quickly going to open. So I'm going to close this and I'm going to open this. And over here, we are going to get started. So first of all, we are going to load the step 1, that is libraries. And over here, we are going to put import pandas as PD. Then from sklearn dot model selection import train test split. Then we are going to put from sklearn dot ensemble import random forest classifier. Now we are going to do again from sklearn dot matrices import accuracy score classification report and confusion metrics. Now, these are all important to validate whether the data which you have taken has no issues, because these equally, if the accuracy is not appropriate, then classification report is going to show you the actual result, because it is going to take the dependency catching each and every point of it. And confusion metrics is going to count how many true positives were there, right? So that's why we are considering all three together. All right. Now let's quickly import Seaborn as SNS, import pyplot as PLT. Now you must have thought of that there are certain libraries which you are going to take only this part in all the models. Let me see what. Okay. Wrong. Yeah, it's small. Now it's fine. So these are all libraries which we are going to do. And you must have seen that starting from the beginning, there are certain libraries which you are taking just like copy and paste, which includes NumPy, Pandas, scikit-learn, test-train split, as well as Seaborn and Matplotlib as pyplot. The only thing which is changing is this. Basically, this is the one which is like depending upon the data set which you are taking, it is going to be changing. Apart from that, all the things are going to be same. The model, you can say the flow is also going to be same. Each and everything, only this thing is going to be changing. Now I'm going to take second step. Step 2 is going to be load the data set. And for this, I'm going to create df is equals to pd dot read csv. And where is my CSV? I'm going to click on to it. Let it connect, and there where I have already downloaded. So I'm going to click on to this particular segment and I'm going to take it and open. Now you can see it over here, and you are going to take the path, put R and this, and inside it you are going to paste. So this is what you are going to do. Read CSV, and this is how, oh no, why it is showing this error. pd.read CSV, it's fine, I guess. It was just showing this sort of error.
Mhm. I'm going to take that X. Let me write it again. Inside it, I'm going to paste this. Yeah, that's correct. I guess it's just showing in that way. So now what we are going to do, we are going to now take features into consideration. That is step number 3, features and target. So features and target means what you are going to consider as your X and what you are going to consider as your Y. So how you are going to do that? Let's quickly do this particular segment. And basically that is going to help you how you are going to consider this particular segment. So we are going to define X is equals to df dot drop, and what we are going to drop over here. So basically we are going to drop attrition, and we are going to write exactly in the same manner, which the way it is written, and it is at axis 1. So this is how you are going to do over here. So you are going to do it. And y you are going to consider as y is equals to df, and you are going to put attrition. So basically over here, this is going to be your input and this is your output. Now there is one more thing which you are going to add on in it. That is going to be your label encoder. As I have already shared why encoder is needed, right? So this is why pandas, like as PD, it was showing an error over here because pandas was not called properly. So I'm going to write one more line and I want all of you also to add that from sklearn dot pre-processing import label encoder, right? So this is what you are going to take. Now there is one more library we will be taking, that is from sklearn dot linear model import logistic regression. So this is what you will be taking. So basically, why we are taking that, this is going to help you for data pre-processing, this label encoder, and logistic regression we will be taking to consider how it is going to work side by side, because multiple charts are going to be developed and this is going to help us how you are going to create it in a better way. Now let's quickly put the next step. Step number 4, and step number 4 is definitely your encode categorical variables. Basically, we are going to use label encoders over here. Label, L you can keep as small, label encoders is equals to, and वो क्या होंगे पहले आप उसको कॉल करोगे by using this library. So this is how you are going to put, and now you are going to put for loop for column n. It is like basically आप किस column से लेना चाह रहे हो. So we are going to now call upon all the column gender. Then we are going to take column
बेसिकली इसी के अंदर आप लोगे, जेंडर के बाद आप लोगे, डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, दूसरा आप ले सकते हो। अम्म, इसको एक बार टैप कर देते हैं और इसमें से डिलीट कर दे, डिपार्टमेंट इज नॉट नीडेड। एजुकेशन फील्ड इज ऑल्सो नॉट नीडेड। यहाँ पे हमें चाहिए job role, so that is what I'm going to write over here. Job, J is going to be capital. Job role. Then you are going to take the next one, which is going to be your overtime. जॉब रोल को आप यहाँ से डिलीट करके इसकी जगह आप लिख सकते हो कुछ और। एंड बेसिकली आई थिंक हमारे पास ये तीन काफी है। तो जेंडर हमारे पास हो गया, जॉब रोल हमारे पास हो गया, ओवर टाइम हमारे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेबल एनकोडर को यहाँ से डिलीट करके हियर यू आर गोइंग टू राइट ली, दैट इज लेबल एनकोडर, एंड यू आर गोइंग टू पुट टैब ओवर हियर। नाउ यहाँ पे हमने एक्स कॉलम को नहीं लिया, यहाँ पे हम रखेंगे डीएफ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम डॉट फिट ट्रांसफॉर्मेशन को कॉल करेंगे और जिसको हमने डीएफ में क्रिएट किया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक्स को इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज अदरवाइज इफ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली यूज एक्स दैट इज one dimensional, it is going to show an error. So this is how you are going to encode. So once you are done with the encoding part, you are going to come out of it and it's done. Now the next part, next thing which you are going to do, you are going to split the data. So let's split the data. So split करने के लिए exactly same thing. X train, X test, Y train, Y test is equals to train test split. XY test size आप रखेंगे 0.2 which is basically 20% testing and 80% training, and state आप 42 रखिए. So that is what, and I guess I have explained it multiple times, so आप इसको directly अपने किसी भी मॉडल से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप जितनी बार इसको लिखोगे आपको ये उतनी बार मेमोराइज हो जाएगी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. Now we are going to train the model. और मॉडल को ट्रेन करने के लिए what we are going to do, we are going to write model is equals to random forest classifier, एंड यहाँ पे हम क्या रखेंगे, random state is equals to, और यहाँ पे भी आप 42 ले सकते हो. So I am also going to give it 42. So basically this is what you have done. Now what you are going to do, you are going to use the same thing, model dot fit. Basically आपने क्या किया है, यहाँ पे एक मॉडल को क्रिएट किया है by calling upon random forest library on which it is going to get trained. Now to train it, you are going to fit X train and Y train. So that is what we will be doing. यहाँ पे आपका हो गया मॉडल प्रेडिक्शन, अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हम मॉडल फिट करेंगे. मॉडल हमने यहाँ पे फिट कर दिया है ना. मॉडल फिट के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रन इट. जैसे आप इसको रन करोगे योर मॉडल इज गोइंग टू बी रेडी. मॉडल रेडी का मतलब क्या है, बेसिकली आपका जो मॉडल है इट इज नाउ रेडी. इट इज गोइंग टू से कि मैंने अब सब कुछ कर लिया है और अब मैं एनालिसिस के लिए रेडी हूँ. बट यहाँ पे आपका पूरा एस्पेक्ट जो है वो फिनिश नहीं होता है. बेसिकली अ लॉट ऑफ टास्क इज लेफ्ट. So I'm just going to quickly revise all these steps in front of you so that you are going to follow all the steps and you are going to memorize each and everything. Basically मैं इसको यहाँ पे एक बार रन करूंगी और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या एरर आया है. In the model. Mm-hmm. Okay.
ऑल राइट, सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज हुई है, हमें ये वाला जो स्टेप है हम इसको ऊपर रखेंगे एक्स और वाई को क्रिएट करने से पहले। ऑल राइट, बिकॉज जो आपका पाइथन होता है वो इसी तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम इस स्टेप को लेके आएंगे। सो आप इसको 3 करो और इस स्टेप को आप 4 कर दो। ऑल राइट, नाउ लेट्स रन इट। नाउ कैन यू सी, क्योंकि पहले ये एरर इसलिए आपको शो कर रहा था बिकॉज इन दिस एरर एक्चुअली यहाँ पे हमने इनपुट्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए, लेकिन इसमें एक इनपुट था जिसमें चॉइसेस थी वेदर द जेंडर इज मेल और फीमेल। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया, जॉब रोल को नंबर्स में कन्वर्ट किया। सो बेसिकली हम इनको एनकोड कर रहे हैं डिजिट्स में, integers में, which is more readable for Python's perspective. So that is what we have done over here. और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हमने रैंडम स्टेट 41 को और 42 को यहाँ पे कंसिडर किया है, और मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो यहाँ पे 42 आ जाएगा आपके पास। सो बेसिकली अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, हमारे मॉडल ने सारी चीजें लर्न कर रही है एंड इट इज रेडी टू give you the aspect of it. And I hope you have understood why we have encoded first and then we have defined x and y. Because सबसे पहले ये gender, job role और overtime को which is yes or no, इनको numeric values के अंदर convert करेगा, which is going to be easier for computer to interpret. And then we are going to fit the data inside x and y. So this is what we have done over here. एनकोड करके फिर हमने x और y के अंदर पुट किया। अगर आप इन दोनों स्टेप्स को चेंज कर दोगे then it is not going to work, it is going to show you an error. Rest part, prediction, error finding and visualization or accuracy, classification metrics, all these things we are going to do in the next class. So guys, stay tuned and keep learning. Thank you everyone.